Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Miss Nargis Shafi from Guards Public School 1. Again welcome you in lecture number 4 of Social Studies for class 6. Now we will start chapter number 2 from Geography section, Weather and Climate. Students, do you know what is weather and what is climate? I know you are thinking that weather and climate is the seasons, winter, summer, hot, cold, but don't you know there is a little difference between weather and climate? So in this chapter we will study about what is actually weather and what is climate and what is the difference between weather and climate. Students, in this chapter we will cover following topics: atmosphere, weather, climate, difference between weather and climate, cause, factors of different climates. Temperature is the main cause of climatic difference and it depends on distance from the equator, altitude, nearness to the sea, ocean currents, rainfall, air pressure, direction of wind. What is atmosphere? The atmosphere of Earth is the layer of gases surrounding the planet Earth is retained by Earth gravity. Student, look at the picture. हमारे planet Earth को जो है atmosphere ने cover किया हुआ है. Atmosphere is actually हमारी फिज़ा, हमारी हवा, ठीक है. हमारे planet Earth के गिर्द ये एक किस्म का cover है इन 5 layers का, जो कि हमें अल्ट्रा रेस से, सन की अल्ट्रा रेस से बचाती हैं. और हमारे इस एटमॉस्फेयर में, हमारी इस हवा में जो है वो 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन है. What is weather? Weather means daily atmospheric condition. Students, have you observed? क्या रोज़ाना एक सा मौसम होता है? No. Weather is hour to hour and day to day change in the atmosphere. आप लोगों ने वेदर फॉरकास्ट न्यूज़ तो वॉच ही की होंगी, यानी कि रोज़ाना का मौसम का हाल. इट इज़ सनी टुडे, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ क्लाउडिंग, डिफरेंट एटमॉस्फेयर कंडीशन. अच्छा, एक और एग्जांपल है स्टूडेंट. क्या गर्मी के पूरे सीज़न में एक सा टेम्परेचर होता है डेली? नो. नॉट ओनली टेम्परेचर बल्कि हमारा एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाता है, यानी कि कभी गर्मी तो होती ही है हर पूरे सीज़न में, लेकिन कभी हवा चल जाती है, कभी सख्त गर्मी होती है, कभी लू का मौसम होता है और कभी कभार क्लाउड्स आ जाते हैं और हल्की फुल्की सी बारिश भी हो जाती है. तो इट मीन्स वेदर इज़ शॉर्ट पीरियड एटमॉस्फेरिक कंडीशन. So the definition is weather means the daily change in atmosphere conditions, sunny, cloudy, etc. It keeps on changing within a few minutes or an hour. Weather is the daily change in temperature, air pressure, rainfall, humidity at a certain place. Example, it is raining today, it is very hot. What is climate? Climate किसी भी एरिया में ज़्यादा लंबे अरसे तक रहने वाला मौसम होता है और इसके लिए एटलीस्ट 30 ईयर्स तक ऑब्ज़र्व किया जाता है कि वहाँ पे सर्दी ज़्यादा रही या गर्मी ज़्यादा रही, और फिर इसी मुनासबत से वहाँ का हॉट या कोल्ड क्लाइमेट डिसाइड किया जाता है. Climate is an average change of weather condition over a whole year. Example, seasons. Climate takes very long time to change, usually 30 years. Example, Karachi city has a mild climate, London city has a cold climate. Now student, you understand very well, climate जो है वो किसी भी country या area में वो एरिया का वो मौसम जो ज़्यादा लंबे अरसे तक रहता है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी, वो वहाँ का क्लाइमेट कहलाता है. और क्लाइमेट जो है वो किसी भी एरिया में 30 ईयर्स तक ऑब्ज़र्व किया जाता है कि कौन सा मौसम ज़्यादा लंबे अरसे तक रहता है. क्लाइमेट जो है वो क्रॉप्स भी क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, क्योंकि जैसा मौसम होगा वहाँ पे वही चीज़ें ग्रो करती हैं. एज वेल एज जो लोगों का लिविंग स्टाइल है, वहाँ उनका पहनना ओढ़ना और खाना पीना भी क्लाइमेट पे ही डिपेंड करता है. हम जो है वो बनाना या हम जो है पोलर रीजन में मैंगोज़ और कॉटन को ग्रो नहीं कर सकते.
Now, student, you understand what is climate, but I know there are many questions arising in your mind. What is the difference between weather and climate? So, these pictures tells you more about clearly what is the difference. Look at this closet. आपको it tells you what to wear each day. And climate आने वाले मौसम के लिए आपके wardrobe में कौन से कपड़े हैं? Difference between weather and climate. Student, there are three main differences between weather and climate. Look at weather column. Number 1, weather is the daily change in atmosphere condition like sunny, windy, cloudy, hot, cold, humid, etc. Climate is the common average weather condition of a particular place. Point number 2, weather does not remain same. It keeps on changing daily, can change within a few minutes or an hour. Climate, it is a average change of weather over a whole year. Example, seasons, winter, summer, autumn, spring. Point number 3, weather is the daily change in temperature, air pressure, rainfall at a certain place. Now, climate, point number 3, climate takes a very long time to change, usually 30 years. Assignment number 1. Students, you have 3 one-word answers and 4 short question answers. Short question answer number 4. Name the cause factors on which different climate depends. You have to write only factors name. And long question answers, write difference between weather and climate. अगर आप लोगों ने वीडियो को अच्छी तरह से वॉच किया होगा तो ये तमाम आंसर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे. Cause factors of different climates. Number 1, temperature. Temperature is the main factor of causing different climates. Temperature is the degree of hotness and coldness of any object or substance. Students, you know, actually temperature is the main factor of causing different climate. जी हाँ, टेम्परेचर की वजह से ही हमारे क्लाइमेट चेंज होते हैं. सर्दी, गर्मी, ये सब किस वजह से? टेम्परेचर की वजह से. ठीक है. एंड टेम्परेचर ही हमें बताता है कि आज हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी सर्दी है या कितनी गर्मी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो हमारी बॉडी को सर्दी फील होती है, और जब हम वेदर थर्मोमीटर में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आज हमारे एटमॉस्फेयर में कितने डिग्री सर्दी है. इसी तरह जब हम गर्म इलाकों में जाते हैं तो वहाँ हमारी बॉडी को गर्मी फील होती है, और फिर हम वहाँ भी यही कि हम देखते हैं कि आज हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी गर्मी है. Note down, student, for a place 5-degree temperature is cold and 45-degree temperature is very hot. Distance from the equator. Students, do you know what is equator? Yes, you know very well. Equator is an imaginary line which distributes our Earth planet into 2 equal parts, northern hemisphere and southern hemisphere. You know, student, the places closer to equator have hotter climate. Example, Brazil, Indonesia and Kenya. Yes, you can see in the picture. आप देख सकते हैं कि सन की रेज डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट कर रही हैं वो इक्वेटर लाइन पर कर रही हैं. सो दोज एरियाज़, दोज कंट्रीज़ विच आर सिचुएटेड upward and downward equator line, they have very hot climate as compared to South Pole and North Pole. जितना हम इक्वेटर लाइन से दूर हैं जो कंट्रीज़, उनका क्लाइमेट उतना ही ग्रेजुअली कम होता जाता है. द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम इक्वेटर हैव कोल्डर क्लाइमेट. एग्जाम्पल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. Altitude, height above sea level. Altitude shows the height above sea level. Temperature decreases with increase in height.
Naturally, about 6.5 degrees centigrade temperature decreases for every 1000 meter. It means at every 100 meter height 1 degree centigrade decreases. Now student, look at this picture. यहाँ आपको शो किया गया है सी लेवल, जो कि हमारा सतह ज़मीन है, यानी हम ज़मीन की सतह से जितना बुलंदी पर जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता रहता है, यानी कि हर 100 मीटर के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज़ होता है। ठीक है, ये हमारे बुलंदी से टेम्परेचर जो है वो कम होता रहता है। लेकिन अनदर मेन थिंग, लुक एट द सेकंड पिक्चर, हम जितना बुलंदी पे जाते हैं ऑक्सीजन लेवल भी कम होता रहता है और टॉप पर तो बहुत ज़्यादा ही, नाउ लुक एट दिस पिक्चर, बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होता है। ठीक है, एक फ़नी सा कार्टून भी है, ठीक है, यहाँ पे आपको शो कर रहा है। वन थिंग मोर स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट, माउंट किलिमंजारो कीनिया में वाक़या है, लेकिन इट इज़ जस्ट ऑन द इक्वेटर लाइन। लेकिन क्या होता है कि ये अपनी बुलंदी की वजह से पूरे साल यहाँ बर्फ़ से ये चोटी ढकी रहती है, यानी कि अगर वो इक्वेटर लाइन पर भी है लेकिन उसकी हाइट की वजह से वहाँ पे कोल्ड बहुत ज़्यादा है और पूरे साल ये जो है बर्फ़ से ढकी रहती है। Nearness to the sea. The places near the sea has cooler atmosphere in summer and milder in winter. This climate is called mild or maritime climate. Example, Karachi. Places far away from the sea are very hot in summer and very cold in winter. This type of climate is called continental climate. Example, Lahore, Quetta and Siberia. It means, students, nearness to the sea is also important factor to change the climate of any place. यानी कि आपने देखा कि जो कराची सिटी जो है वो कोस्टल एरिया है, सारे समंदर के किनारे पर वाक़या है, तो यहाँ पे सर्दियों में ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है, माइल्ड क्लाइमेट होता है। जबकि लाहौर सिटी और कोयटा बहुत डिस्टेंस पे हैं साहिल समंदर से, तो वहाँ पर सख्त मौसम होता है, सर्दी में बहुत सख्त सर्दी और गर्मी में बहुत गर्मी होती है। ओशन करंट्स. It is a continuous movement of water in the ocean from one place to another. Ocean currents are generated by wind, salinity and gravity of moon. There are two types of currents, cold currents and warm currents. जी स्टूडेंट, ओशन करंट्स जो है वो जिस तरह से लहरें सतह समंदर के ऊपर मूवमेंट है वाटर की, बिल्कुल इसी तरह ओशन करंट्स जो हैं वो समंदर और ओशन वाटर डेप्थ में जो है वो पानी की एक जगह से दूसरी जगह मुसलसल घूमना है। ठीक है, पानी जो है समंदर का पानी और ओशन का पानी वो एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूस घूमता रहता है। और ये क्यों जनरेट होते हैं? करंट्स जनरेट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ विंड, सैलिनिटी एंड ग्रेविटी ऑफ मून। चाँद के उतरने और चढ़ने के जो डेज़ हैं इसका इनसे ताल्लुक़ होता है। अच्छा, यहाँ देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट्स। ब्लू कलर जो है वो कोल्ड करंट्स को शो कर रहा है और वार्म करंट्स को रेड कलर शो कर रहा है। करंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक तो क्लाइमेट को चेंज करने में अहम फैक्टर है, और जो हम ये समंदर में शिप्स चलते हैं एक किस्म का ये उनका रास्ता है। ये करंट्स ही की वजह से बड़े बड़े शिप सेल कर सकते हैं, कश्तियाँ समंदर में सेल कर सकती हैं। Rainfall. Rainfall is an important factor in determining the climate of a place. Less rainfall makes the land dry and barren, also raise the temperature too hot. More rainfall makes land fertile and green, also cools down the temperature. Note, the world's average rainfall is between 1000 to 2000 mm a year. Atacama Desert is western coast of Chile, is the driest place on earth. Here have had no rainfall for 100 years. Cherrapunji in Assam, India had 22990 mm rainfall in a year 1861. This is still the world record. जी स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल, वो एरियाज़ जहाँ बारिश बहुत होती है वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है और ग्रीनरी होती है, और वो इलाके जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ड्राई बैरन लैंड डेजर्ट एरिया होते हैं। एटाकामा डेजर्ट जो है वो ड्राइस्ट प्लेस है अर्थ की, क्योंकि वहाँ पे कई सालों से बारिश नहीं हुई। और चिरापुंजी जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है रेन के।
Air pressure. The air around us has weight called air pressure. At high places, air pressure is low. At lower places, air pressure is high. In high air pressure, the weather usually fine and dry. In low air pressure, the weather is usually stormy and wet. देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि हवा जो है वो अपना वेट रखती है। कैसे कि ज़मीन पर जब हम हैं तो हमें ये ग्रेविटी की वजह से हमारा वेट है, और यही जब हम एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में तो वहाँ हमारा वेट नहीं होता। ठीक है। और दूसरा जो है, जो हमारा नॉर्मल हाई एयर प्रेशर में हमारा वेदर फाइन एंड ड्राई होता है, जबकि लो एयर प्रेशर में स्टॉमी एंड वेट होता है। Direction of wind. Direction of wind has an important effect on climate. Winds that blow from Arctic or polar region are cold and called north winds. Winds that blow from south are warm. The winds blow across a large area of sea, pick up a large amount of water and produce rain. Assignment number 2. Short question answer. Students, we have 5 short question answers and 4 one words. Again student, watch कीजिए अच्छी तरह से लेक्चर को, आपको तमाम आंसर्स यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है। Assignment number 3. Long question answer. Student, you have to define number 1 distance from equator, number 2 altitude, number 3 air pressure, and also fill in the blanks with given suitable words. 8 blanks हैं आपके पास, and I hope student आपने concentration से अपनी वीडियो को सुना होगा। 2 से 3 बार वॉच कीजिए अपनी वीडियो को, you will get the answer very easy and quickly.